हेलो टॉपर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी के बाद मैं यही वीडियो लेके आ चुका हूँ साइकोलॉजी के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स में तो मेरी वीडियो से मोर देन 90% क्वेश्चंस आए थे और अब बारी है साइकोलॉजी की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लेन द ट्रायड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, डिस्कस द वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, व्हाट इज एप्टीट्यूड, डिस्कस इट्स नेचर एंड मेजरमेंट, explain the concept of creativity and the factors influencing it, discuss the cultural variation in intelligence, explain the concept of self-esteem and self-efficiency, describe the major traits approaches to personality, discuss the Freud psychodynamic approach to personality, explain the humanistic approach to personality, describe the various methods of personality assessment including projective techniques, what is the influence of culture on personality, define stress and discuss its various types, explain the different coping strategies for stress, discuss the impact of stress on psychological health, describe the characteristics of psychological resilience, explain the factors underlying abnormal behavior, describe the major anxiety disorders, discuss the symptoms and causes of depressive disorders, what are the key features of schizophrenia, explain the causes of obsessive compulsion and related disorders, discriminate between traumas and stressor related disorder, describe the main features of bipolar and related disorder, explain substance related and addictive disorder, describe the principle of psychodynamic therapy, explain the technique of behavioral therapy, discuss the cognitive therapies for psychological disorder, explain the role of alternative therapies, describe the ethics of psychotherapy, what are the factors that contribute to healing in psychotherapy, define attitude and describe its component, explain the factors involved in attitude formation, discuss the strategies for attitude change, what are the causes and consequences of prejudice, discuss the strategies for handling prejudice and discrimination, describe the attitude behavior relation, explain social cognition, explain the nature and formation of groups, discuss the influence of groups on individual behavior, explain the phenomena of social loafing, describe the concept of group polarization, discuss the factors that influence group cohesion, what is social influence and what are its types, explain pro-social behavior, describe aggression and the factors that influence it, explain the concept of conformity, what is obedience, what are the differences between formal and informal groups, what are the factors that contribute to intergroup conflicts, explain the application of psychological principles to solve social problems. दोस्तों, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और एग्जाम में अपनी प्रेजेंटेशन बढ़िया रखना। यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। तो दोस्तों, इन क्वेश्चन से 90% पेपर आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है पर पूछा यही जाएगा, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी अगर आप में से किसी को भी इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए या फिर इन क्वेश्चंस के आंसर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।